Hello, I hope everyone is good. तो जस्ट मैं फॉरेक्स को देख रहा हूँ ओके GBP USD Euro USD okay last couple of weeks I was looking at gold right originally NQ ES में करता था so that I temporarily paused to understand metals platinum gold right so that I understand now and ये forex pairs देख रहा हूँ like how Goldback is working and how things are working. So I think if you're trading forex काफी करते होंगे like we saw this massive rally uh I mean this week starting Monday and फिर obviously there is some retracement required right तो ये था yesterday's high एंड यहाँ पे जीबीपी में ये हाई था कल का तो थर्सडे यू कैन एक्सपेक्ट टू बी द हाई ऑफ द वीक राइट इफ मंडे वाज द लो so now this action happened yesterday and I kind of knew that it's not ready क्योंकि अगर हम गोल्ड बैक दोनों पे एक बार लगाएं तो ये हाई पे आया है ठीक है ये इसने यहाँ पे हाई पे आया है एंड ये वाला वो वही लेग है राइट सो एसएमटी तो था यहाँ पे राइट कल बट वो एसएमटी सिक्वेंशियल नहीं था बिटवीन क्वार्टर्स नीचे अगर देखेंगे बीच में ये जो है दैट इज अ स्किप राइट सो दैट्स नॉट अ ट्रू एसएमटी एक्चुअली और सिंस ये PO3 लिक्विडिटी कहीं कहीं ली नहीं थी ना इस पे लेफ्ट में अगर देखें और राइट में PO3 लिक्विडिटी ये रन इम्पोर्टेंट है ये जो ऊपर गया ना ये देखिए ये यहाँ पे लिक्विडिटी रन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू देन रियली कंफर्म कि दिस इज इट राइट दिस इज वेयर इट स्टॉप सो मेरा कल मैंने यहाँ पे 4 आवर रिजेक्शन ब्लॉक पे इधर आई थिंक समवेयर कल 4 आवर रिजेक्शन ब्लॉक पे मैंने बिकॉज अब मैं फोरेक्स देख रहा हूँ तो यू कैन एक्चुअली स्विंग ट्रेड इट राइट मैंने 4 आवर का जो रिजेक्शन ब्लॉक था यहाँ पे लिया था और मेरा SL इसके ऊपर था एक्सटेंशन के ऊपर मैंने इसको ट्रेड नहीं किया था जीबीपी को ट्रेड किया था ओके एंड स्विंग के लिए basically looking at coming back towards the range somewhere in this area okay तो ये कल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कुछ हो ओके सो अब मैं समझाता हूँ कि गोल्ड बैक का कहाँ पे यहाँ पे दिस इज द थिंग यू शुड नॉट मिस तो ये बेसिकली जब तक ये PO3 स्टॉप रन ना हो इट्स बेटर टू अवॉइड इट स्पेशली ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम में व्हेन यू हैड अ मैसिव रैली तो अब क्या हुआ अब यू हैव द sequential SMT राइट सो बिटवीन ये जो नीचे देखेंगे प्रीवियस ब्लू बिग क्वार्टर एंड द करंट फ्राइडे का वहां पे अभी SMT कंफर्म नहीं हुआ है बट या दिस इज राइट दिस हैज टेकन दैट एंड GBP हैज नॉट टेकन इट एंड मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था इवेंचुअल जो ट्रू SMT होगा वो GBP पे बनेगा एंड यू शुड ट्रेड द वीकर एसेट राइट तो अब ये देखिए ये तो डीलिंग रेंज ऑलमोस्ट कंप्लीट करने आ गया है विच मीन्स इट्स पॉसिबल इट कैन गो लोअर इफ वी कैन क्लियर दिस 50% राइट तो देर इज रूम एंड तो आज क्या हुआ फिर लेट्स गो टू 5 मिनट्स तो 81 डीलिंग रेंज आई थिंक इज फाइन तो यहाँ पे आफ्टर द स्टॉप रन we got 5 minute में shift with closure breaker fair value gap we have a fair value gap right over here so it traded that and then now it's reaching equilibrium first target is always equilibrium but now the expectation is कि यही था right um, this is this is it right so we can expect कि this should go towards these areas the algo 2 run भी है right so from high low to breaker fair value gap and then that's a continuation algo right so that is the gold back setup and this worked really well I mean you have the order block right here right and then breaker exactly fair value gap right so I think overall good setup we obviously it's not complete completion
I just need to see it reach equilibrium. So that is the first thing that is confirmed, right? You get that 1.98 risk to reward always. So you take the trade here. और ये जो high है, that is coinciding with your previous day high as well, right? And then you get this, uh, sorry, ये fair value gap पे होना चाहिए, ये fair value gap पे, right? So you get this 1.9 risk reward. Obviously, generally it can go till here, but what we are expecting now is for it to go till the order block first, right? क्योंकि ये वाला सीधा जाता है rejection block, breaker. So let's see that flow. So rejection block, rejection block, breaker, fair value, rejection, fair value, then the opposing order block, then mitigation block, then liquidity void, and then continuation, right? So that will be the pullback till mitigation block. So pretty interesting. See if this run reaches here. Because the other way now to look at the same thing is, इसको अगर हम हाफ शिफ्ट करते हैं, राइट, ऊपर अगर हम हाफ शिफ्ट करते हैं तो अब इस तरफ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये था PO3 स्टॉप रन, ऊपर आया, फेल, राइट, इट केम डाउन. अब ये जो था ये रन नहीं था, इट डिडंट रन आउट दिस लिक्विडिटी, बट यू सी द सेम थिंग, यू सी द ऑर्डर ब्लॉक. ऑल्दो ये सीधा ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा रहा था, दैट मीन्स दैट वाज एल्गो 1, but it didn't complete it, right? It came back from equilibrium. So now taking from fair value gap is not the right thing because it reached equilibrium, right? So what is it more likely to do? More likely to take this out, right? And then we have to see agar we'll get the continuation lower. So yeah, I mean, this is, in all of this junk, this is the only cleanest setup that I'm seeing that is working perfectly well, right? तो अगर यहाँ पे देखें तो यस, यहाँ पे PO3 स्टॉप रन नहीं हुआ है. द thesis is कि Thursday will be left open in any one of the pairs, right? So that's what has happened. Also from a market structure perspective, 1 hour में देखेंगे तो बेसिकली जब ये यहाँ से ऊपर आ रहा है तो कोई भी इंड्यूसमेंट वो ले नहीं रहा है, राइट? सो इट्स नॉट taking any inducement. So basically, one can say that this is maybe here closure नहीं मिला, देखिए यहाँ पे, and this is not a valid pullback, कोई valid pullback नहीं है. Then यहाँ पे again it didn't take any inducement, right? So ये एक valid pullback है, ये एक valid pullback है here, and then you got the break. So yeah, this can be considered a low, right? So you can consider maybe this as one leg and then this as a second leg, और यहाँ पे भी फिर कोई भी inducements नहीं ली हैं, and ये inside वो आके then it has broken. So this is the whole leg from, I would say, from this point to here is one leg. ठीक है, तो one leg curve, you can see the premium and discount, right? So 50% is matching that order block area as well. So this is a good thing to read कि ठीक है, even if it wants to push higher, then maybe it should come down, and then of course ये inducement है यहाँ पे, right? But major inducement इसका फिर यही है, major inducement is here only. तो या बाइंग के लिए यहाँ से इंटरेस्ट आ सकता है, राइट? ये दिस इज इफ इंड्यूसमेंट इज टेकन, देन हमारा पहला POI एंड सेकंड POI इज ऑर्डर फ्लो वाला, राइट? सो this area, if it goes past this, then this is for buy, this is for buy. If these are failing, we are going lower, that dollar will tell us. So dollar का dealing range देखिए, ये high से it has made all its way to the low. Now अगर यहाँ पे ये नीचे ले लेता ना liquidity, I would have been more confident कि this is it.
But if we can get the order block here, we get the flow, then equilibrium तक तो आएगा ही, right? So even this dollar in the dealing range is right now at the shared low है ये. So as long as it doesn't break past extension, we can expect a dollar coming back. And ये, I think this is the lowest low in quite a few years. So 1 week. So ये देखिए, this is the low 2022, 2022. So we are near the 2022 lows, and so is GBP and all, right? So अगर हम देखेंगे वो भी 2022 highs के पास पहुंचा हुआ है. So I think these are just the factors to see as well. तो अभी काफी टाइम हो गया. I haven't really posted anything and such because I had other work as well. और मैं ये सब भी देख रहा था, राइट? सो मैं अभी एसएमसी कॉन्सेप्ट भी देख रहा हूँ, राइट? सो एसएमसी यूज करके मैं गोल्ड यूज कर रहा था, ये भी एसएमसी. सो आई एम मिक्सिंग एसएमसी विद little bit of gold back and seeing how that works out. So far it worked out well. मार्केट स्ट्रक्चर एक क्लियर हो जाता है तो एसएमसी ऑल्सो थोड़े टाइम बाद आई जस्ट tell you my opinion and then how to mix these things, right? So that I will find some time, okay, and figure that out as well. तो अभी यहाँ पे कहाँ हैं हम? I think it's just teasing and teasing, but this should come here and then we'll see. They might go back. यहाँ पे एक मिस कर दिया था इसने कि फेयर वैली गैप, I think is 15 minute का an important one. Let me just check. ये 15 मिनट वाला एक इम्पोर्टेंट गैप था, पर एक तरीके से किया भी, या आई मीन दिस वो फेल हो गया ना टच करने के लिए. बट जस्ट थिंकिंग कि मे बी इट्स एन अनफिनिश्ड बिजनेस ऑल्सो, राइट? सो इट कैन, बट ये काफ़ी बैलेंस्ड होगी. एक बार ये रेंज से बाहर निकलेगा देन इट कैन कम बैक अप एंड देन मे बी गो लोअर. आई डोंट नो इफ दिस इज द टर्निंग पॉइंट और नॉट. बट ये गोल्ड में पता लग जाएगा, सॉरी डॉलर में पता लग जाएगा इफ इट कैन go back, right? It goes back, gets inside this range, then that would be perfect. So anyway, I'll stop it here and then we'll see you on the next one.